The Bhopal Gas Tragedy, often referred to as the world's worst industrial disaster, unfolded on the early hours of December 3, 1984. A pesticide factory owned by the American Union Carbide Corporation leaked methyl isocyanate gas, exposing over 500,000 people in Bhopal to the deadly toxins. The immediate aftermath was catastrophic, with 5,474 deaths officially recorded and countless others maimed for life. Even decades later, survivors continue to suffer from chronic health issues, while the toxic legacy of the disaster lingers in soil and water of the affected areas. On January 1st, 2025, after nearly 40 years, the waste left behind the defunct Union Carbide plant and began its journey to Pithampur, a town 250 kilometers away from Bhopal, the capital city of Madhya Pradesh. A convoy of 12 sealed container trucks carried 377 tons of toxic material, marking a significant but long delayed step towards addressing the environmental aftermath of the tragedy. Officials assured that the disposal process would adhere to stringent environmental safety measures. However, this move has sparked protests and raised fresh concerns about potential contamination in Pithampur itself. नीरज जी, कचरा यहाँ पर जलाया जाना है, कचरा जलाए जाने की व्यवस्थाएं हैं, क्या लगता है आप यहाँ के स्थानीय हैं, कैसे इसको देखने और कैसे इसका विरोध करें? जैसे कि सर हमारे यहाँ पे इसका जो ये यूनियन कार्बाइड का कचरा है, इसका कम से कम अगस्त जुलाई से मतलब विरोध कर रहे हैं यहाँ के लोगों कि यहाँ पे नहीं जलाया जाने मतलब नहीं देना चाहिए जलाने के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे समय मतलब नजदीक आ चुका है, मतलब जैसे जैसे प्रशासनिक स्तर पे मतलब आ गए हैं, मतलब कचरा कल 4:30 बजे सुबह आ गया है यहाँ पर। और यहाँ के मतलब जो युवा है हमारे और हमारे जो कि यहाँ के सारे संगठन के लोग हैं, इसके पूरे विरोध में लगे हुए हैं। और आज इसी के कारण मतलब यहाँ पे रैली है, महारैली हमने हमारे पीथमपुर में। और कल हो सके तो पीथमपुर पूरा बंद होने का आह्वान किया गया हम लोगों ने। हम ये लड़ाई काफी समय से लड़ रहे हैं। पिछले 4 महीने से मैं सड़कों पर उतरा हुआ हूँ और मैंने कहा था कि चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इस कचरे का निष्पादन पीथमपुर में नहीं होने दूंगा। उसी को लेकर अगर कचरा आज पीथमपुर में आ गया है तो अब हमारी यह लड़ाई है कि इस राम की कंपनी पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट को और कहीं ले जाया जाए, कहीं बंजर भूमि में जहाँ किलोमीटर तक कोई रहवासी क्षेत्र नहीं है वहां ले जाया जाए, इसका स्थापना वहां की जाए और इस जहरीले कचरे को वहां इसका निष्पादन किया जाए। इसके स्वास्थ्य पे दुष्परिणाम अगर आज नहीं होंगे तो कल होंगे। हमारी आने वाली फसलें तो खराब हो ही रही है, क्योंकि पहले से ही पीथमपुर में इसका इतनी औद्योगिक के कारण प्रदूषण है और फसलें तो खराब हो रही है। और अगर इस जहरीले कचरे का पीथमपुर में निपटान हुआ, इसका निष्पादन हुआ, तो पीथमपुर की नस्लें तो ठीक, फसलें तो ठीक, नस्लें भी खराब होगी। हमारी रूह कांपती है अगर हम इस विषय में भी बात करते हैं। मेरा मानना है कि हमारे आने वाली नस्लें और फसलें दोनों खराब करने का काम करेगा, ये पर्यावरण को नष्ट कर देगा। तो मैं चाहता हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ, पूरा पीथमपुर, अभी हम यहाँ पर कम संख्या में इसलिए बैठे हैं कि हम नहीं चाहते कि पीथमपुर का कहीं भी माहौल खराब हो। लेकिन जब बात एक बार उधर जलना चालू हुआ तो मैं मानता हूँ कि सड़क पर या यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक लोग रोड पर जगह नहीं रहेगी, इतने पैर मिलेंगे आपको। मैं मानता हूं कि न्यायालय में भी इसका अभी विषय चल रहा है, इंदौर में भी कई मंत्री लगे हुए बैठक ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जीत पीथमपुर वासियों की होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहाँ पर जितने भी युवा वरिष्ठ हमारे साथ में इस मुहिम में बैठे हैं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारी विजय होगी। Over the years, survivors and activists have consistently decried government apathy towards their plight. Despite the magnitude of the tragedy, adequate compensation and healthcare have been elusive for many victims. The shifting of toxic waste, though necessary, is viewed by some as a superficial attempt to close a dark chapter without addressing the underlying issues of corporate accountability and environmental rehabilitation. Activists argue that the disposal decision is a big risk. They recall a 2015 trial incineration of 10 tons of Union Carbide waste in Pithampur, after which nearby water and sources and soil reportedly showed signs of pollution. The government
however, dismissed these claims, citing rigorous tests and consultations before finalizing the current disposal plan. Nonetheless, locals near Pithampur remain wary, fearing that their communities might become the new victims of an unresolved industrial disaster. The Bhopal Gas Tragedy symbolizes a failure of governance, corporate responsibility, and justice. Survivors not only battle health complications like respiratory issues, neurological disorders, and birth defects, but also live with the psychological trauma of the night that changed their lives forever. The Union Carbide factory remains a haunting reminder of the disaster, with activists arguing that the toxic waste should have been addressed a decade ago. So, what is the road ahead? As the waste makes its way to Pithampur, the government faces the dual challenge of ensuring safe disposal and rebuilding trust with the affected communities. Experts stress that the importance of transparency is very much there. Rigorous monitoring is needed, and continued medical and economic support for the survivors is the dire need. The tragedy serves as a grim reminder of the need for stringent industrial regulations, corporate accountability, and a commitment to environmental justice. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.